अस्सलाम वालेकुम। स्विनरशिप इज़ हियर फ्रॉम इमर्स इन। बहुत सारे इंतज़ार के बाद फाइनली आपका जो सिलेबस है वो मैंने कंपाइल कर लिया है। मैं असल में वेट कर रही थी कि टीजीटी का अलग से सिलेबस देने की बजाय फिर लेक्चरर के लिए अलग से कंपाइल करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है कि मैं आप सब के लिए एक ही दफ़ा जो है वो सारा सिलेबस सेट कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया है कि मैंने तमाम जो इससे रिलेटेड सीट्स हैं उन सब के एड्स, उन सब का सिलेबस जो है वो यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, और मैं इस आज की वीडियो में बोलूँगी कम और आप लोग खुद पढ़ेंगे, ठीक है? Maybe you see some things are being repeated. I did it intentionally to make you understand and memorize. No doubt that your vocabulary should be very strong, but if you are stuck with some tricky questions, just try to use elimination technique for synonyms and antonyms. ग्रामर यूसेज में क्या करना है आपने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली में क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस पार्ट ऑफ स्पीच का क्या फंक्शन है। ग्रामर यूसेज पोर्शन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपने तमाम किस्म के जो होते हैं ना सेंटेंसेस, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल, ये सब के सब आपको आने चाहिए। इनके रूल्स होते हैं कि आपने पास्ट फ्यूचर किस को कैसे कैसे कंबाइन करना है, उनका रट्टा लगा लें, ठीक है। This is not an absolutely complete syllabus. It is just a roadmap. It is just a way to go. It is just a way to understand that how you should try to overcome all these things. And please be sure to analyze all the writings. बस मोटा मोटा पढ़ लिया, समरी पढ़ ली है, ये नहीं करना आपने। Either you're preparing era-wise or century-wise, just be sure to analyze, to understand, to overcome the political, religious, literary, and social background, social scenario of that particular time, particular era. उससे चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, अब्जॉर्ब हो जाएंगी, और यही करना है आपने, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। वर्ड मेमोराइजेशन बाद में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। Before we proceed to the third and last portion of this syllabi, I'll divert your attention towards 5 symbolia that emerge in boast upon. First of all, we have English lecture preparation. That session is going to be started on 22 July 2024, definitely, absolutely led by me. And in this session, we will undergo all the literary eras, and within the literary eras, we will learn about political, religious, social, and literary backgrounds and the tussle, writers, their writings, figures of speech, literary terms, linguistics, and most importantly,
teaching methodologies that is very helpful for Federal Public Service Commission aspirants. This session will run for 3 months, 4 days a week. Next we have test session that runs around the year. This test session provides a test series of 50 tests. और ये जो टेस्ट हैं ये आपको हर एरा के अलग अलग से मिलेंगे और इसमें मॉक टेस्ट भी हमने ऐड किए हैं और पास्ट पेपर्स भी हमने ऐड किए हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी हैव एडेड जीके वन होल पेपर फॉर ग्रामर. As third number we have grammar portion, grammar session. In this session we deal all of the students separately from basic to advanced level. इसमें आप चाहे किसी भी लेवल का पढ़ना चाहते हो आपको अलग अलग से फैसिलिटेट किया जाएगा. In spoken session you will be mastered from day-to-day conversation to professional conversations. At the last we have GK session में हम क्या करेंगे कि we have been uploading videos on our YouTube channel. आप वहाँ से उसको देखें, अपने नोट्स बनाएं, जितना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वहाँ से नॉलेज गेन करें. वो सब के सब नोट्स कोई भी याद नहीं कर सकता, जितना आपको याद हो जाता है वो याद करते जाएं, नोट्स बना लें. और बहुत जल्द हम जो है एक वीकेंड सेशन शुरू करने जा रहे हैं ऑन एवरी संडेज उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको समझ नहीं आ रही है, सो दैट दे कैन क्लैरिफाई देयर डाउट्स. In third and last video, we will learn that how we should attempt this test smoothly and confidently. Stay tuned. Allah Hafiz.